क्योंकि हम चाहते हैं कि यूथ को बाहर का एक्सपोजर मिले। अभी हम अपने में खेल रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर लेके आएंगे तो वहाँ से एक्सपोजर मिलेगा। तो गेम को बड़ा करना है, लीग को बड़ा करना है और लोगों को मोटिवेट करना है कि इस गेम को खेलो। ये पहला सीजन है। पहले सीजन में हमने 6 टीमें रखी हैं। हर सीजन में हम लोग 1 या 2 टीमें बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हम लोगों को प्रतिभा बच्चों की हम आगे बढ़ा पाएंगे। हम चाहते हैं कि देश का हर टैलेंट ठीक तरीके से खेले और इंटरनेशनल लेवल पे खेले। Yes, of course, it's a good era of the Indian basketball. Almost 75th year next year, 2025. We are going to 75th year. इस देश में राज्यों की भूमिका बहुत अलग है। तो क्या आपकी लीग ने अगर अलग अलग राज्यों में भूमिका बनाई है आगे जाने की, तो कितनी राज्य सरकारों से आपकी बातचीत हो पाई है? क्योंकि अभी अगर हम ग्रास रूट पे ले जाएंगे, बूट कैंप्स कर रहे हैं, ग्रास रूट पे जाएंगे, तभी तो ये हमारा जो विजन है कि गांव का बच्चा जाके बाहर की लीग में खेलेगा। तो ये सारा प्रोसेस अब से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट 2 years you will see the difference. Things happen really, really quickly. That's happened in the space of just 3 years. Working together with the same goal and the same ambition. नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली स्थित ओबराय होटल में और यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से है। बास्केटबॉल को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट की तरह पर, जी हाँ, जिस तरह से क्रिकेट के आईपीएल मैचेस होते हैं उसी तरह से बास्केटबॉल के भी जो लीग मैचेस होने हैं, उसके चलते पूरी दुनिया में जो ये मैचेस खेले जाएंगे, जिनकी शुरुआत आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो घोषणा करके दी गई। तो आइए सीधा चलते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको हिस्सा बनाते और पूरी जानकारी देते हैं। The question was why U-25? The federation already gave a proper tender. There was so much of litigations. It's 6 months before it's happened actually. So we want to start one more league in the U-25 based on the youth over playing the college. Because we don't have any league others. So for example, if you see the US, so many leagues, Australia, New Zealand. So we don't want to fight because almost 150 crore people is near. We are going to 1.5 billion people. So doing only one league is not enough for our country. It's not enough for our players. That's why BFI broadly start to our legal team, our Secretary General and Treasurer, everyone sit with the investors, the founders, how to sort out the issues, to how to go for the forward. I thanks to the founders to accepting the new league system U-25. That's why we are going to start U-25. Does not matter the professional league U-25. It will cover all the players. So it's a new era of the Indian basketball system. Do you have any? Hope you got it. The answer. Next one, when will you begin women's league? Yes, of course, the professional league, maybe it will going to start the June month. I requested the founders, the next season have to start women. The founder have to the answer. Of course, BFI, because for us, medal, whatever the medal, Asian medal, men and women is equal points. It's not a different men medal or women medal. How we strong the Australian president here, New Zealand president here. They are best performing women division. We are going to focus 3x3 also. So the talks going on with InBL people in future 3x3, U-25 and women league also. So first we'll start. Then once the commercial model will sustain and success, definitely the league will start all the gender and different ages. So we have the franchise in New Zealand Basketball League for women as well. So we're going to bring the best of the best Indian girls and women to take it to New Zealand League. So that's what we have agreed with them on.
Thank you. Can I just add two things to that? One is that what we need to do with all of our players is to actually also do some testing to see how they fit physically and skill and technically against the rest of the world. And what we can do, even during this league, if we have the time and so on, is to actually start to do that process with the women so that we're actually ready into the future. And the other thing that I would say is that some of the international players that are coming are older than 25 because they will be the mentors for the younger players to help them develop their skills and gameplay and so on. So there will be mentors with each of the teams. The next one, how players will be inducted? Sure. So how will the players be selected? I think I showed you one slide with some statistics on the players. The international coaches that are coming will also, if they can, would like to attend the nationals so they can watch the players playing as well. We've done some testing in the past, and that's how we'll select the best players to play in the league. And of course, we will have an auction for the players. So the coaches will actually be able to see what the players are worth within the budget that they have. Nationals are between Jan 5th and 12th. So we're hoping to have the international coaches and the players here so that they can attend and actually watch the players playing, their future colleagues, hopefully within the team. So yeah, I think they're all very much looking forward to doing that. Captain for Basketball Limited and the Basketball Federation, how many work for this match in both the tournament? फेडरेशन जो बास्केटबॉल फेडरेशन लिमिटेड का है और उसको बास्केटबॉल फेडरेशन से जो आपका टाइप हुआ है उसका वर्क क्या होगा दोनों का जो टूर्नामेंट के अंदर डिफरेंट वर्क क्या पार्ट क्या है? Can I try and answer that? Yes. So the question is, how will we work together to get this league going? So we have a commission. So we have a commission which is made up of representatives from Basketball Federation and also from InBL Pro, and they will help to guide the league into the future. Actually, there will be a governing body of the basketball league in which people will be there from Basketball Federation of India as well as the InBL. So the major decisions regarding whatever are there will be taken in that governing league. The captain affiliated with the Basketball of India, affiliated by Basketball of India. The federation affiliated by Basketball of India. Yes. Yes, both committees, the Basketball Federation of India members and the InBL people, all technical people is the governing body. Every every season we are sit and discussion, then we'll go for the league every season. सर एक सवाल यहाँ से. It is affiliated to the government as well as the international body, Basketball Federation of India. सर जो खिलाड़ी गांव में रहते हैं वो कैसे उनको इसका फायदा मिलेगा और वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं इसमें क्वालिफाई करने के लिए? एक्चुअली हर चीज का एक सिस्टम होता है. बास्केटबॉल जो है जैसे नेशनल चैंपियनशिप होती है, उसके पहले एक स्टेट चैंपियनशिप होती है. उस स्टेट चैंपियनशिप में डिस्ट्रिक्ट के लोग पार्टिसिपेट करते हैं. उसके पहले वो ब्लॉक लेवल पे भी चैंपियनशिप होती है. तो नेचुरली उसमें से बेस्ट सिलेक्टेड प्लेयर पहले डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद अगर वो अच्छे खेलते हैं तो स्टेट लेवल पे आते हैं, और नेशनली जब वो नेशनल लेवल्स पे खेलेंगे तो उसमें से जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको चांस मिलेगा लीग में खेलने का. और नेशनली जब लीग चालू होगी तो जो विलेजेस है, जैसे जैसे जिन लोगों को गेम में इंटरेस्ट है, पता लगेगा कि अपना कैरियर भी वो बास्केटबॉल में बना सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बास्केटबॉल की तरफ अट्रैक्ट होंगे. Adding on to Mr. Gill, sir, we are also going to be working
through a lot of boot camps, locally and internationally, to give the abilities to our players, and a lot of feeder league options as well in coming years. So we are creating the whole annual calendar, constantly going through people, kids who are from different villages all over the world, all over India, to help aspire their goals and then and help them play better. My question is to Mr. Parveen. You talked about the rapid league format. Can you give us the details of how does it work and how does it ensure that all the players on the bench also get game time? Sure. First of all, as I mentioned, mostly if you're a coach of basketball, you tend to play your best players. That might be 7 or 8. So the other players may not get onto the court. So what we do is we take those players, the 7 on the end of the bench, and we play a short form format before the game. So it's 4 quarters of 4 minutes with no timeouts, and the players have to play. And if we're able to, what we will do is to make sure that the percentage from those games actually qualify for the main league, which means that it's connected. It means that when the coaches are coaching for training, they're coaching the same things, the same style of play, the same way to play offense and defense. But it means everybody gets to play on game day, which is a huge plus for everyone. And as I mentioned before, that this has been in New Zealand for a year or so, 2 years now. And the under-18s finished 4th in the World Cup. And that's a testament to this rapid league. And that's what we can do. And you know, the President talked about how we can get up to the rankings of 25 and so on. I know that with this development program that we're embarking on, we can do that in 4 or 5 years. We absolutely can do that. It's just about giving people the opportunity. And that's what the Rapid League does as well. But it's attached to the main league, so it's not extra, no new players. It's just allowing the bench players to play. हमने इंडिया में आईपीएल का क्रेज देखा है लोगों में. क्रिकेट के लिए लोग बहुत क्रेजी रहते हैं. अब बात बास्केटबॉल की हम कर रहे हैं, तो अब क्या लगता है कि लोग कितने क्रेजी होने वाले हैं अब आईएनबीएल के लिए? Basically, I don't know Hindi, but I can understand. You should not compare with any other the cricket, because 1984 they are number 1, the world championship. If you want win or if you want to do business success, then we need a foundation. Any business, any success, it will start the foundation. This is the foundation day. This is not the winning day. The Federation and India, this is the foundation. Even InBL and BFI, this is a good start. It's a foundation day. Jagmohan Dalmia vision in cricket, they started almost 1980s. Number 1 World Cup, 1984. That time you can see the Abu Dhabi movies or whatever. 1983. So look, nobody believed that time how India has went the biggest story. Right now is number 1. So almost 30 years journey. After that only they started in commercial model in cricket. After that only the IPL is winning. Now everyone is saying IPL. They are waiting more than 30 years. Even they was at number 1. So right now, the league will help to changing the ecosystem in basketball, to starting the new academics, the basic. Yesterday we went to the inauguration. We have a good heights. For example, I met one girl 6.6 feet from Gujarat yesterday. So we have a talent. That's not a matter. But we need a continuity. After nationals, what we are going to do, the academies program, grassroots level programs. We have how do we focus education, how do we focus the training programs, international training level programs. Once we set the rank will, within the 1 year, India, it is 84 to right now 76th position after Kazakhstan match. How do we decrease our ranking system? Once India will become a top 10, definitely the commercial model will win. Definitely after cricket, within 4 to 8 years, basketball will become the second game in business and successful model. That is our ambition.
Thank you, Arjun. I would also like to say something on record here. We are going to try very hard to mix a lot of entertainment and pop culture to this league. As you know, all the young youth and young population coming out of India, they're into kicks, the right jerseys, following the teams all over the world. There's a big pop culture popping up in India. We're gonna capitalize on that with our merchandising opportunities. We have a lot of inquiries coming through from Hollywood, Bollywood, NBA superstars, international superstars. So we now want to put together a very entertaining ecosystem for the Indians. So not only they're going to be fun on the court, we'll have a lot of other fun activities planned for the games. People to come and be the right spectators and are sold out. Thank you. I'd just like to add to the importance of foundation, getting the foundations as strong as you possibly can. It was mentioned before in the presentation, the New Zealand Men's League, Professional Men's League, has been in operation for 42 years. New Zealand's Women's Professional League is currently in its third season, number 3, and it finishes this weekend with the grand final in New Zealand. In the space of 3 years, this year, the women are being paid the same as the men professionally, pay parity. First time I've ever seen it in basketball. 50% attendance increase for the women's game this year. And every game is not only live in New Zealand on Sky Sport and around the world, but also live on ESPN in the United States. The reason why I wanted to highlight those 3 things is because if you get the foundations right and you work together, things happen really, really quickly. That's happened in the space of just 3 years. Working together with the same goal and the same ambition, things can happen very, very quickly. Those foundations from day one are the most important thing to get right. So I wish you well. I think it's going to be very, very strong based on what I've heard here today. Well done. What is the age limit for a player to enter the league? The age limit? Age limit or? Age limit to enter the league. Sure. So for Indian players, it's 25 or younger. And for international players, it's 25 and younger, except for 2 mentor players who can be over the age of 25. Indian men basketball took part in 1980 Moscow Olympics. Can we expect another Olympic berth in 10 years? Yes, of course, that is our ambition. Within 8 years, it's not upcoming, it's the US, Los Angeles, I think. It's not upcoming Olympics, but within the 8 years, our focus to participate in Olympics. The Asia, we have to enter the finals within 4 years, 3x3, men and women, and 5x5 also. That is the ambition we already set. That is our goal. Work is already started. मेरा सवाल है कि 4 साल आपकी इस लीग को हो गए इंटरनेशनल, लेकिन भारत में कितने राज्यों में आपने राज्य सरकारों को इसके बारे में जानकारी दी है? क्योंकि अलग अलग राज्यों में अगर इस लीग की जानकारी पहुंचेगी तो वहां के राज्य के युवाओं को भी जानकारी मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं रुपेंद्र बराड़ जी से भी और अभिषेक जी से भी मेरा एक सवाल है बहुत महत्वपूर्ण कि इस देश में राज्यों की भूमिका बहुत अलग है, तो क्या आपकी लीग ने अगर अलग अलग राज्यों में भूमिका बनाई है आगे जाने की, तो कितनी राज्य सरकारों से आपकी बातचीत हो पाई है अभी तक? हाँ जी, तो अभी हम इस लीग के थ्रू हमने पहले डोमेस्टिक लीग करवाई हुई है। वी हैव बीन टू, हम चले गए थे अराउंड 20 सिटीज में और 10,000 प्लेयर खेल चुका है पहले डोमेस्टिक लीग में। अब इंटरनेशनल लीग में हम उनको प्रोफेशनली जब वो प्ले करेंगे तो वी विल रीच टू आउट टू ऑल द स्टेट्स एंड द फेडरेशन ओवर देयर टू मेक इट बिग। क्योंकि अभी अगर हम ग्रास रूट पे नहीं जाएंगे, बूट कैंप्स कर रहे हैं, ग्रास रूट पे जाएंगे, तभी तो ये हमारा जो विजन है कि
गांव का बच्चा जाके बाहर की लीग में खेलेगा। तो ये सारा प्रोसेस सबसे शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट 2 years यू विल सी द डिफरेंस। आज का दिन भैया फाउंडेशन है बास्केटबॉल लीग की, इंटरनेशनल बास्केटबॉल लीग की। हमारे देश में बड़ा हिस्टोरिक डे है और आप देखिएगा आने वाले समय में हम ग्रास रूट से ऐसे ऐसे बच्चों को निकाल के लाएंगे। हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर जगह टैलेंट है। हम टैलेंट को ढूंढ के ट्रेन करके ऐसी सिचुएशन लाएंगे कि गांव-गांव के बच्चे जो है नेशनल लेवल पे खेलें, इंटरनेशनल लेवल पे खेलें। जो रूल रेगुलेशन होंगे इंटरनेशनल लेवल के होंगे कि ग्राउंड की लेवल, बॉल की वेट 720 ग्राम जो भी होती है, तो क्या सारा इंटरनेशनल लेवल का जो भी पैरामीटर होता है वही होगा या कुछ INBA अलग से कुछ इसके रूल बनाएगा? नहीं, सेम रूल्स होंगे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। फीबा का जो रूल है वही दैट रूल्स। Sir, your league begins in a month's time. Do you have a broadcaster on board where would the matches be streamed? So we are in touch with the broadcasters and we will announce shortly. And they are on the Sky Sports in New Zealand. So they are also in the ESPN over there. So for Indian broadcaster, we will announce it very shortly. The gentlemen here have got some other interviews and so on to do. So can I very much thank everybody for coming today. Thank you to our guests as well. And of course we'll be around to answer any more questions that you may have. But thank you very much again for your time. Thank you. हमारे साथ आधव अर्जुन जी हैं जो कि फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। सर, फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट हैं, तो उसके नाते कुछ दर्शकों से कहें। Yes, of course, it's a good era of the Indian basketball. Almost 75th year. Next year, 2025, we are going to 75th year. Right now, we are already signed with the NBA for school league. This is U-25 INBL league. Then the professional league also is going to start. Compared to Australia and New Zealand, they have so many league system actually in US also, but we don't have any proper league system. Definitely, the league system will reach our players in grassroots level to in professional players. So my best wishes InBL Pro team owners and all the players. Thank you. सर नमस्कार, सांची बात में बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन आपका दे दें। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अभिषेक यश त्यागी है। मैं फाउंडर और को चेयरमैन हूँ InBL Pro लीग का। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे भारतवर्ष के सभी प्रतिभाशाली प्लेयर्स को, सभी बास्केटबॉल प्लेयर्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा और कोशिश करूँगा और पूर्ण समर्पण से हम लोग कोशिश करेंगे कि देश की प्रतिभा हम जगह जगह से निकाल के देश के टैलेंट को, जो है हमारे देश में टैलेंट भरा पड़ा है, हम देश की प्रतिभा को निकाल के और अपने टूर्नामेंट पे खिला सके। इंटरनेशनल स्तर का ये टूर्नामेंट होगा, इसमें इंटरनेशनल स्तर के प्लेयर्स आके खेलेंगे। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर पूरी दुनिया से आ रहे हैं, बहुत सारे कोचेस पूरी दुनिया से आ रहे हैं। तो देखिए, आप सोचिए कितना बढ़िया होगा कि हमारे नेशनल प्लेयर्स और बाकी दुनिया के प्लेयर्स सब एक साथ इकट्ठे खेलेंगे, सारे कोचेस इकट्ठे होंगे और बहुत बड़ा अनुभव। ये जनवरी 2025 से ये शुरू होना है जी। और 6 टीमें आपने बताई हैं, तो 6 टीमें कौन कौन सी, कैसे? ये पहला सीजन है। पहले सीजन में हमने 6 टीमें रखी हैं। हर सीजन में हम लोग 1 या 2 टीमें बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोगों को प्रतिभा बच्चों की हम आगे बढ़ा पाएंगे। हम चाहते हैं कि देश का हर टैलेंट ठीक तरीके से खेले और इंटरनेशनल लेवल पे खेले। और हम ये भी दिखाना चाहते हैं, हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हम ये भी दिखाना चाहते
चाहते हैं, अपने सारे प्लेयर्स को ये देना चाहते हैं कि वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का गेम हमारे हिंदुस्तान में भी हो। तो जैसे लीग मैच में, जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं बोलियां लगती है प्लेयर्स की, तो कुछ इस तरह का इसमें। देखिए ये प्लेयर्स के लिए कितना जरूरी है और कितना बढ़िया है। आप ये सोचिए कि हमारे प्रतिभाशाली प्लेयर्स को भी पैसा मिले, उनकी भी आमदनी बढ़े, ये बहुत जरूरी है और इसीलिए इसका ऑक्शन होगा। अभी दिसंबर एंड में हम प्लेयर्स का ऑक्शन करेंगे, हमारी 6 की 6 टीम प्लेयर्स खरीदेंगी। हमारे प्रतिभाशाली जो प्लेयर्स हैं हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के, उनको सबको आमदनी होगी। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट गोल है। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस होगा? हाँ बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस होगा, आप प्रेस भाइयों के सामने होगा। थैंक यू सर। सर एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम रुपिंदर बराड़ है जी, चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ द InBL। जिस तरीके से टूर्नामेंट की आज शुरुआत की गई है, क्या रूपरेखा रहने वाली है इस टूर्नामेंट की रूपरेखा रहने वाली है कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਵਰੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਫਾਈਨਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। पंजाब से आप संबंध रखते हैं, पंजाब में युवा जो है वो किस तरीके से इस खेल में आ सकता है, आपने किस तरह बता सकते हैं? तो युवा जो है वो ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਚ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਇੱਕ अपॉर्चुनिटी है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ प्रोफेशनल करियर भी बना सकते हैं। और 6 टीमें आपने बनाई गई है, कौन कौन सी टीमें हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत की जा रही है? ये शुरुआत होगी दिल्ली तो, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई है। तो स्टार्ट होगी पंजाब तो, दिल्ली तो, फिर जाएगी चेन्नई और जो फाइनल होंगे वो जाएंगे अबू धाबी। कब से इस मैच की शुरुआत की जा रही है, कब से मैचों की शुरुआत की जा रही है? मिड जनवरी से शुरू हो जाना, 15 जनवरी के करीब ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। मकसद की है? ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਯੂਥ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ खिलाड़ी है वो क्या भारत के ही रहेंगे या फिर विदेशी? नहीं, भारत के खिलाड़ी रहेंगे तो कुछ खिलाड़ी बाहरों भी आएंगे। 100 सारी टीम बनेगी जो 2-3 प्लेयर आउटसाइड इंडिया भी होंगे। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा। और बास्केटबॉल को लेकर के जो ये लीग, जो ये फेडरेशन जो शुरू हुआ है और बास्केटबॉल को लेकर के पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बास्केटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ये लीग जो है, जैसा कि क्रिकेट में लीग मैचेस होते हैं उस तरह से लीग मैचेस बास्केटबॉल के जो होने का जो ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसको लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।